Hello friends, welcome to my YouTube channel Mechanical Challenger. In this session, we are going to discuss about lathe machines. 75 questions MCQ will be available. ISRO, DRDO, RRB, NTPC, SEL, IOF, DMRC, SSC, LMRC प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्व विथ आंसर की मिल जाएगा जो ओरिजिनल पेपर से मैं कलेक्ट किया हुआ है। तो चलो বন্ধুরা लेट्स शुरू करा जाए। The first question is the following standard tapers are provided in the lathe center। जो जो साइड में दिया हुआ है जो आईओएफ फीटर में आया था 2017 में। तो ऑप्शंस है मोर्स टेपर, बीटिस, मैट्रिक एंड ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो इसका राइट आंसर है मोर्स टेपर। तो सेकंड क्वेश्चन, lathe spindle has got internal thread, external thread, taper thread और नो थ्रेड। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सटर्नल थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज इन lathe through gearbox, worm and gear, rack and pinion और half nut। तो उसका आंसर होगा रैक एंड पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which material the tailstock is made। ऑप्शन है टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील। तो इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। Okay. Next, on which one of the following can a tool post be mounted। DMRC 2017 में आया था। उसका ऑप्शंस है क्रॉस स्लाइड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक एंड कंपाउंड रेस्ट। तो इसका आंसर होगा कंपाउंड रेस्ट। ओके। नेक्स्ट, the gear set used in the lathe machine is called। आप लोग देख लीजिएगा इधर जो जो एग्जाम में आया था उसका डिटेल्स इधर अवेलेबल है। तो इसका आंसर है स्पोर गियर, इंटरमीडिएट गियर, बेवल गियर, गियर ट्रेन। तो इसका आंसर होगा गियर ट्रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाई कैरेज इज given on lathe। Option A, to hold the passage, to hold and fill the shearing tool, to hold the stationary center, to reverse the spindle speed। तो कैस किस लिए दिया जाता है? इसका आंसर होगा बी। ओके, इसका जो होल्ड करने के लिए और फिल द शेयरिंग टूल। ओके। नेक्स्ट, size of the lathe is specified by which one of all below। तो साइज स्पेसिफाई कैसे होता है? टेपर कटिंग से, सेंटर हाइट से, स्पीड और कटिंग डेप्थ। तो इसका आंसर होगा सेंटर हाइट। तो उसका जो सेंटर हाइट होता है उस हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेथ इज यूज्ड इन प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क में कौन सा लेथ यूज होता है? सेंटर लेथ, बेंच लेथ, टूल रूम लेथ और कैप्स्टन एंड टर्नेट लेथ। तो इसका आंसर है कैप्स्टन एंड टर्नेट लेथ। ओके। नेक्स्ट, फॉलोअर टेस्ट। ऑप्शन ए, follows the workpiece, follows the tools, fixed to the bed और इसका ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर होगा फॉलोज द टूल। फॉलोइंग रेस जो होता है वो टूल को फॉलो करता है, जो काटिंग टूल होता है उसको फॉलो करता है। ओके। नेक्स्ट,
लेथ बेड इज मेड ऑफ, इसमें ये ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। ओके नेक्स्ट, टू सेट द वर्क रन एसेंट्रिकली द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू होल्ड द जॉब। ओके, तो इसका ऑप्शन है ए थ्री जॉ चक, बी कलेक्ट चक, फोर जॉ चक और नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर जॉ चक। ओके, रिमेंबर फोर जॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर जॉ चक, जो इसरो टेक्नीशियन 2016 में आया था। आप लोग देख लीजिएगा, इधर सब डिटेल्स दिया हुआ है कौन सा एग्जाम में कब आया था। ओके, नंबर 13, नेम ऑफ द पार्ट, name of the part of the lathe machine that provides the method of holding and moving the cutting tool। तो इसके ऑप्शन है ए बेड, बी हेड स्टॉक, तीन कैरेज, चार टेल स्टॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैरेज। नंबर 14, द एडवांटेज ऑफ टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। सेट ओवर मेथड का क्या एडवांटेज है? दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल टेपर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरनल टेपर, most suitable for large taper angles, small taper on large workpiece और all of above। तो नंबर 14 का क्या होगा? ए स्मॉल टेपर ऑन लॉन्ग वर्कपीस, इसके लिए टेस्ट यूज ओवर सेट ओवर मेथड यूज होता है। नंबर 15, सेंटर्स इन लेथ आर मेड हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन। दो बार आया था आरआरबी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। ओके, तो इसका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। ओके नेक्स्ट, which part of the lathe machine has high compressive strength? ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया था 15 में, ए बेड, बी मेन स्पिंडल, सी लीड स्क्रू और चार है स्लाइडिंग गियर ऑफ हेस्टॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए बेड। ओके नेक्स्ट, carriage run in lathe machine parallel to the axis of rotation, option b at any angle with the axle of rotation, perpendicular to the axle or none of the above। तो इसका क्या, कैरेज जो होता है वो जो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के जो पैरेलल होता है उसके हिसाब से कैरेज रन करता है। ओके, तो इसका आंसर होगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके नेक्स्ट, which of the following parts control the length of taper while the taper is cut by the compound slide method? Okay, compound slide method में जो टेपर कट होता है ना उसका लेंथ का कंट्रोल कौन करता है? ए टेल स्टॉक, टॉप, बी टॉप स्लाइड, सी क्रॉस स्लाइड और सैडल। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉप स्लाइड। ओके, इसका आंसर होगा टॉप स्लाइड। नंबर 19, back gear mechanism in headstock, the experiment is for बैक गियर किस काम के लिए एक्चुअली लगता है? इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है रिड्यूसिंग स्पिंडल स्पीड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, रिवर्स द स्पिंडल और नंबर डी है ट्रांसफर ऑफ पावर स्टार्ट गियर फ्रॉम स्पिंडल गियर। तो नाम इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। ओके, ऑप्शन ए रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। ओके नेक्स्ट, taper which or taper when using tap and turning attachment fitted on। तो उसका टर्निंग, तो जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट्स में टेपर टर्न काटता है तो उसके लिए जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट फिट का होता है। तो नंबर ए है बेड, नंबर बी कैरेज, नंबर सी टेल स्टॉक, नंबर डी क्रॉस स्लाइड। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेड। ओके, सिंपल है बेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
this type of tool post is replaced with the tool of tool post. तो इसका ऑप्शन क्या है? पिलर टाइप टूल पोस्ट, क्विक चेंजिंग टूल पोस्ट, इंडिस्टिंक्टिंग टूल पोस्ट और बीटीज टाइप टूल पोस्ट. ओके, तो एक फुल्ली जो उसके अंदर टूल होता है वो एक साथ रिप्लेस हो जाता है. तो इसका सिंपल है, इसका आंसर है क्विक चेंज टूल पोस्ट. ओके, इसका आंसर है क्विक चेंज नंबर 2. ओके, नेक्स्ट नंबर 22. स्टेडी रेस्ट इज यूज्ड, DRDO में आया था. स्टेडी रेस्ट इज यूज्ड to run the job, to capture the job, to support the job, to for zigzag job. तो इसका सिंपल है, ये है सपोर्ट करने के लिए. जो स्टेडी रेस्ट होता है वो जो लॉन्ग जॉब होता है उसका सपोर्ट के लिए स्टेडी रेस्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट. फॉलो अ स्टेडी इज फिटेड ऑन द ए ऑप्शन ए ऑन द लेथ कैरेज, बी टेल स्टॉक, सी हेड स्टॉक, बी लेथ बेड. तो इसका आंसर क्या है? ऑन द लेथ कैरेज. जो फॉलोइंग होता है वो लेथ कैरेज, जो फॉलोइंग स्टडी होता है वो लेथ कैरेज के ऊपर ऑप्शन ए फिट होता है, और जो स्टेडी फॉलो होता है वो बेड के ऊपर फिट होता है. ओके, नेक्स्ट 24. चेजिंग डायल इज माउंटेड ऑन राइट एंड ऑफ द, ऑप्शन है टेल स्टॉक, बी आर्पन, सी क्रॉस लाइट, डी नन ऑफ दिस. तो चेजिंग डायल का फिटिंग होता है, ये होता है आर्पन के ऊपर, आपटन के ऊपर फिटिंग होता है. ओके, नंबर बी. 25. द टूल फॉर होल्डिंग एंड टर्निंग द थ्रेडिंग डाई इज नोन एज, ऑप्शन है हैंडल, एडजस्टिंग स्क्रू, स्टॉक और ड्रिफ्ट. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टॉक. ओके, इसका आंसर सी. नेक्स्ट 26. रोटरी पावर ऑफ लीड स्क्रू इज ट्रांसमिटेड टू द लेथ कैरेज थ्रू. तो रोटरी पावर लीड स्क्रू से लेथ कैरेज में कैसे ट्रांसफर होता है? इसका ऑप्शन ए है गियर, बी रैक एंड पिनियन, सी हाफ नट और डी चेन एंड स्पॉकेट. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी हाफ नट. तो हाफ नट से ये ट्रांसफर होता है. ठीक. 27. Which of the following is used for catching cylindrical rough workpiece? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिंड्रिकल रफ वर्कपीस याद रखना है. तो ऑप्शन क्या है? 3 जॉ, 4 जॉ, कलेक्ट जॉ और मैग्नेटिक जॉ. तो उसका आंसर क्या होगा? कलेक्ट जॉ. ठीक है, कलेक्ट जॉ जो होता है उससे सिलिंड्रिकल रफ वर्कपीस होल्ड करता है. नेक्स्ट 28. पॉइंट ऑफ लाइफ सेंटर एंगल. तो लाइफ सेंटर का पॉइंट कितना होता है? पॉइंट ऑप्शन है इसका 30, 45, 60 और 190. तो इसका ऑप्शन क्या है? उसका 60. सिंपल है, इसका आंसर होगा 16, सी, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काटिंग द टेपर डेड सेंटर इज यूज्ड. तो काटिंग का टेपर करने के लिए डेड सेंटर में क्या यूज होता है? तो उसका ऑप्शन है हाफ सेंटर, बॉल सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर. इसका एक ऑप्शन टाइपिंग मिस, अच्छा प्लेन सेंटर. तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा बॉल सेंटर. बॉल सेंटर से टेपर कटिंग के लिए टेल स्टॉक में ये यूज होता है. ठीक है. डू नॉट रब द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज केप्ट. तो उसका ऑप्शन ए है रेक कपल, हेलिक्स एंगल, क्लियरेंस एंगल और नन ऑफ द अबव. तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा क्लियरेंस एंगल. एक क्लियरेंस है जिसके ऊपर से जॉब का रब नहीं होता है. 31. वर्क पीस प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन, द डायमीटर इज प्रिपेयर्ड. कौन सा प्रिपेयर पहले करता है? मेजर डायमीटर, बी कोर डायमीटर, सी पिच डायमीटर और ऑल ऑफ द एबव. तो इसका सिंपल है, इसका आंसर होगा मेजर डायमीटर. पहले मेजर डायमीटर होता है, उसके बाद वो एक्सटर्नल थ्रेड काटता है लेथ मशीन पर. तो 32. इन
in tools for turning hard materials, rake angle is kept. तो हार्ड मटेरियल काटने के लिए रेक एंगल कैसे रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव रेक, ऑप्शन बी नेगेटिव रेक, जीरो रेक और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा? उसका आंसर होगा बी नेगेटिव रेक। इन हाई स्पीड स्टील लेथ टूल शेप, हाई स्पीड जो काट हाई स्पीड लेथ के लिए क्या होता है, काटिंग टूल का कितना टेम्परेचर में सेव रहेगा? तो इसका ऑप्शन है 800 डिग्री, 700 डिग्री, 600, 9000 डिग्री। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा 600 डिग्री सी। 34. Which of the following angles of the lathe tool chips particles helps remove? ऑप्शन है टॉप रेक एंगल, ऑप्शन बी फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी स्लाइड क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी बैक क्लियरेंस एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका टॉप रेक एंगल। ओके, इसका ऑप्शन ए टॉप रेक एंगल। यूजेस ऑफ ऑब्लिक कटिंग, ऑप्शन ए फॉर फेसिंग, ऑप्शन बी फॉर टर्निंग, ऑप्शन सी फिनिशिंग टर्निंग, ऑप्शन डी रफ टर्निंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिनिशिंग टर्निंग। ऑब्लिक कटिंग फिनिशिंग टर्निंग के लिए यूज होता है। ओके, टूल एंगल हुईच इम्प्रूव शार्पेस्ट फिनिश, ए क्लियरेंस एंगल, बी रेक एंगल, सी नोज एंगल और डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी रेक एंगल। ओके, इसका आंसर होगा बी रेक एंगल। ओके, 37. द different spindle speed on lathe from arithmetical progression, geometrical progression, harmonical progression और static progression। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी geometrical progression। ओके, the chuck prepared for quick setting and accurate centering of the job is 3-jaw universal chuck, 4-jaw chuck, collect chuck और डी मैग्नेटिक chuck। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कलेक्ट जॉब, कलेक्ट चक, सॉरी। तो नंबर सी। 39. टू कैच फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग ए फेस प्लेट इज यूज्ड फॉर रफ जॉब, सॉरी, ऑप्शन ए राउंड जॉब, ऑप्शन बी फिनिश्ड जॉब, ऑप्शन सी इरेगुलर जॉब, ऑप्शन डी हॉलो जॉब। तो इसका आंसर क्या होगा? इरेगुलर जॉब। इरेगुलर जॉब के लिए फेस प्लेट यूज होता है। ठीक है, Number 40. Cylindrical object of small size of an engine lathe. Hold on. 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, collect chuck और मैग्नेटिक चक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी कलेक्ट चक। जो कलेक्ट चक होता है उसमें सिलिंड्रिकल स्मॉल साइज का जो जॉब होल्ड होता है हेड स्टॉक में, ठीक है, इंजन लेथ के ऊपर। टू होल्ड गियर और पुली, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गियर और पुली होल्ड करने के लिए लेद मशीन में क्या यूज़ होता है? जो हेड स्टॉक होता है उधर क्या यूज़ होता है? ए मैंड्रेल, दी एंगल प्लेट, स्टडी और कैच प्लेट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 41 का इसका आंसर होगा मैंड्रेल। ओके, मैंड्रेल ऑप्शन ए। 42. सेंटर which lying a job in a 4-jaw chuck, which tool do you use to test? तो 4-jaw chuck के जो एक जॉब होल्ड करने के लिए उसका सेंटर निकालने के लिए कौन सा यूज़ होता है इसमें? ऑप्शन में उसका ऑप्शन है कैलिपर्स, डिवाइडर्स, सरफेस गेज और स्ट्रेट पेन स्काइवर। तो इसका सिंपल है, इसका ऑप्शन है सरफेस गेज। सरफेस गेज से बेड के ऊपर सरफेस रख के उसका सेंटरिंग करना पड़ता है। ए ओके, नेक्स्ट 43. By which device does the long job hang from the middle? Support is given carriage, steady, spindle, tail stop। तो लॉन्ग जॉब का जो लॉन्ग जॉब टर्न होता है उसमें सपोर्ट के लिए क्या होता है? यूज़ होता है स्टेडी यूज़ करना पड़ता है। ओके, 44. What is the material of brace tip used in cutting operation of lathe? ऑप्शन ए
mild steel, option B high carbon high chromium, option C tool steel, option D टंगस्टन कार्बाइड। तो सिंपल है, इसका ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, जो ब्रिज टिप में यूज होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ चेजिंग डायल इन ए लेथ मशीन? ऑप्शन ए सेपरेशन, ऑप्शन बी ड्रिलिंग, ऑप्शन सी थ्रेडिंग, ऑप्शन डी एक्सपल्शन। तो इसका ऑप्शन होगा थ्रेडिंग, ऑप्शन सी। For heavier depth of car, the rake angle is negative, 0, positive और none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेगेटिव। 47. Which operation of the lathe is used for making non-standard hole? तो इसका ऑप्शन है ए ड्रिलिंग, बी रिमिंग, सी बोरिंग और नन ऑफ द अबव। तो नॉन स्टैंडर्ड होल कहाँ होता है? नॉन स्टैंडर्ड होल होता है आपका बोरिंग में। ओके, नंबर सी। 48. An operation of reducing the diameter of a workpiece over a very narrow surface is known. Option A boring, option B grooving, option C chamfering, option D turning। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉरी ऑप्शन सी चैम्परिंग। ओके, चैम्परिंग क्या होता है? जो डायमीटर रिड्यूस हो जाता है वेरी नैरो सरफेस में। ओके, 49. A flat surface can be produced by a lathe machine if the cutting tool moves parallel to the axis of rotation of the workpiece, roughly perpendicular to the axis of rotation of the workpiece. Option C at an angle of 45 degree, option D none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी perpendicular to the axis of rotation of the workpiece। Number 50. The speed of cutting tool in a lathe machine is x-ray, millimeters per cross sectional area of stroke, millimeters per revolution, millimeters per length of stroke, none of the above। तो सिंपल है, इसका आंसर होगा मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ओके, तो ये आया था आपका इसरो में टेक्नीशियन में आया था 2016 में। नेक्स्ट, the left center are provided with standard taper known as champion taper, Morse taper, sharp taper और brown taper। तो सिंपल है, इसका Morse taper होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52. Rod slide moves in the lathe machine parallel to the axis of rotation at any angle with the axle of rotation, perpendicular to the axle of rotation और none of the above। तो इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये सेल डीएसपी में आया था 2014 में। ओके, नेक्स्ट, हाफ सेंटर इज यूज्ड ऑन lathe। ऑप्शन ए supporting the workpiece, turning long workpiece to easy lubricate the workpiece, or B to face the workpiece to the center of face। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा to face the workpiece to the center of the face। ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 54. Which of the following method for cutting flip taper is used? ऑप्शन ए straight over method, ऑप्शन बी taper turning attachment, ऑप्शन सी form twist, ऑप्शन डी compound rate। तो इसका आंसर क्या होगा? ये compound इसमें काटता है। ओके, ये भी सेल डीएसपी में आया था। ओके, नेक्स्ट, मल्टी स्टड थ्रेड इज कट ऑन lathe by scissor, by die head, by single point tool, by split die। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा by single point tool। नेक्स्ट, 56. What type of chips at the time of mild steel turning should be released? Chips by rotation, long curly chips, eye shaped chips और semicircular chips। तो इसका आंसर है long curly chips। ओके, ऑप्शन बी।
होल इज कैम्फर्ड, होल इज कैम्फरिंग, ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 120 डिग्री, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, बैक गियर इज यूज फॉर डैश ऑपरेशन, रिमिंग, ग्रूविंग, फॉर्मिंग और थ्रेड कटिंग। तो बैक गियर किसमें यूज होता है? थ्रेड कटिंग में यूज होता है। ओके, ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, an undercut soldier is produced a grooving tool, B parting of tool, C square nose tool और D no none of these। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पार्टिंग टूल से टर्न होता है। ओके, undercut soldier प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट, in case of turning, speed of the job is 4 times greater than turning के ऑप्शन ए ग्रूविंग, ऑप्शन बी नार्लिंग, सी फेसिंग, डी नन ऑफ दी। तो इसका आंसर होगा बी नार्लिंग। नार्लिंग का जो स्पीड होता है उससे 4 गुना स्पीड थ्रेड कटिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, 61, taper turning attachment is used to cut, taper turning attachment is used to cut, option A external long taper, B external slip taper, option C both internal and external taper, ऑप्शन डी ओनली इंटरनल taper। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, ऑप्शन सी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल taper। ओके, 62, आफ्टर थ्रेड कटिंग द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ड्रिलिंग, कैम्परिंग, फाइलिंग, फेसिंग। तो इसका आंसर होगा बी कैम्परिंग। ओके, नेक्स्ट, which device is used to turn center hole job। तो सेंटर, जिसमें सेंटर होल रहता है वो जब टर्न करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ता है? इसका ऑप्शन है ए मेन ड्रिल, बी टेल स्टॉक, सी जॉ चाक और डी एंगल प्रेस। तो इसका आंसर है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक है, इसका मेन ड्रिल आंसर है। ठीक है, 64, फॉर हाई स्पीड टर्निंग व्हाट टूल नीडेड, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, स्टेलाइट और माई स्टील। तो इसका आंसर होगा स्टेलाइट, ऑप्शन सी। ओके, द डायरेक्शन ऑफ फीड इन टर्निंग ऑपरेशन इज राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन सी टॉप टू बॉटम, ऑप्शन डी इन एनी एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए राइट टू लेफ्ट। ओके, ऑप्शन ए राइट टू लेफ्ट सही आंसर। 66, इन टर्निंग कटिंग स्पीड इज डिफाइंड बाय, कटिंग स्पीड कैसे डिफाइंड होता है? स्पिंडल आरपीएम ऑन डायमीटर ऑफ द जॉब, स्पिंडल आरपीएम एंड डायमीटर ऑफ द जॉब और लेंथ ऑफ द जॉब। तो उसका आंसर होगा सी स्पिंडल आरपीएम एंड द डायमीटर ऑफ द जॉब। Which of the following made the cutting tool of the lathe? DMRC में आया था 2017 में। तो टूल स्टील, माइल स्टील, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम, हाई स्पीड स्टील। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील। ओके, नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ केजिंग डायल ऑन द lathe is to achieve ए taper turning, बी cutting of taper thread, C cutting of multiple thread, option D packing of the thread accurately at the beginning of each cut। इसका आंसर होगा डी, जो थ्रेड कटी हुआ रहता है उसको फिर से काट करने के लिए यूज होता है, आपका चेजिंग डायल यूज होता है। ठीक है, 69, द टेल स्टॉक इज टेपर्ड इनसाइड द बैरल, टेपर कैसे रहेगा? मोस्ट टेपर, जर्नल टेपर, ब्राउन शाफ्ट टेपर एंड मैट्रिक टेपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोस्ट टेपर। ओके, ऑप्शन ए मोस्ट टेपर इज द राइट आंसर। ओके, 70, बेस सेंटर इज डैश देन द लाइफ सेंटर। तो बेस ऑप्शन है नो फ्रिक्शन, इक्वल फ्रिक्शन, लो फ्रिक्शन और मोर फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोर फ्रिक्शन। ओके, तो बेस सेंटर में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है लाइफ सेंटर के अगेंस्ट में। ओके, तो 60, 71, in turning the tool is from the center of cutting and job, what happened is placed above। Okay, so tool can break, turning rough, the tool will vibrate or all of the above। तो उसका जो एक्चुअल सेंटर है उससे ज़्यादा ऊपर में हम लोग दे देंगे
क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव। taper taper turning can be set in lathe machine। taper turning कैसे करेंगे? इसका ऑप्शन है tail stock offset by taper turning attachment by swivel compound race, simple mistake है, by all of the above, option D, all of the above। okay, all of the above, option D। for turning cylindrical rough casting चाक is used। सिलेंडर आप कास्टिंग में कौन सा चाक यूज होता है? 5 चाक, 4 चाक, कालेक चाक और मैग्नेटिक चाक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कालेक चाक। ओके, कालेक चाक में यूज होता है। द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द वर्क पीस, ऑप्शन बी वर्क पीस मटेरियल, ऑप्शन सी कंडक्शन ऑफ द वर्क पीस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी। ओके, एंड लास्ट, turning workpiece at high speed on a lathe machine, which of the following centers is used। तो टर्निंग हाई स्पीड टर्निंग के लिए कौन सा सेल स्टॉक में कौन सा सेंटर यूज होता है? बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, पाइप सेंटर और रिवॉल्विंग सेंटर। तो इसका आंसर है रिवॉल्विंग सेंटर। ओके, मैंने 75 क्वेश्चन कवर कर लिया है जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन so that you can notified when I upload videos। okay, thank you for watching।